Hello students, welcome to the class today. So we are carrying on with the revision work. History revision, we had already started. Nationalism in Europe, we have completed the first chapter. Now we are proceeding with the revision of the second chapter. The revision of the second chapter stands as such like it was by unanimous decision that we need to complete the second chapter, the nationalism in India first. So I'm carrying on with this nationalism in India. Brief introduction I had given in the last video, if you had seen. There was, because in European countries, there was the formation of nation states. So people were understanding who they are, what they have to do, and all the processes that were taking place. The monarchy was being removed, the republic was being instated, the people who were there, they were carrying on with a simple idea and with a simple system of democracy. Okay? And people were drawing inspiration from lot many things. बहुत सारी चीजें थी जो लास्ट क्लास में, in the last video I had told, they were drawing inspiration from the new symbols, new icons, new songs, new ideas. बहुत तरीके, मतलब new यहाँ इसलिए यूज हुआ है because old was changing and it was being replaced by revolutionary ideas, by the thought processes that existed in the society, and new links were there, new boundaries were being founded. Most countries में ये जो new national identity that was being created, अलग तरीके से जो लोगों का सोचने का तरीका था, you know, the way people were thinking and their processes, ये था. अब क्या हुआ, वन क्वेश्चन दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है, वन क्वेश्चन एक जो कि आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, दैट what were the things, what were the reasons, how the imperialism has impacted the nationalistic movements in India. इसमें क्या होता है कि एंटी colonial movement had started not only in India, other parts of the world as well. Colony में लोगों को, the people, the imperialistic policies that the Europeans had, with the imperialistic policies they had come to India, they have captured many the Indian subcontinent, and they were imposing their own ways and conditions. People understood, people began discovering their unity, and nationalism is connected to anti-colonial movement. Nationalism in India is connected to anti-colonial movement. Got it? Colonies that are there, these colonies were to be finished, and people now have made up their mind that they will establish themselves in a new manner. And there was lot of oppression under the colonialism, because the different groups that were there, they were oppressed in different manner by these countries which had made their colonies in different countries, which have made themselves powerful and which have proved to try themselves powerful on the weaker ones. वीकर थे नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे that you are weak and we are powerful. Colonialism का effect was felt everywhere, and freedom was, notion of freedom, क्या होता है कि freedom, everybody is not thinking about the freedom of the country. हर एक को country की freedom नजर नहीं आ रही है. Got it? Many people are trying to understand, they are experiencing in a varied manner that some people wanted freedom from the zamindars,
some wanted freedom from landlords, some wanted freedom from bonded labor. So one thing that is there, that notion of freedom, because this is what we will be dealing in the chapter. Many places we will be talking about it, that notions of freedom was not same for everyone. Okay, हर एक के लिए एक बराबर का नहीं था. Congress under Mahatma Gandhi, you know, Congress had changed all its processes, all its struggle under the leadership of Mahatma Gandhi. They tried to force these groups together. ये जो अलग अलग groups थे, which had different notions of freedom, they were brought together by Mahatma Gandhi and under the leadership of Mahatma Gandhi by Congress. This is what you need to understand. Got it? लेकिन ये यूनिटी जो था, ऑफ कोर्स यूनिटी इज देयर. चार बर्तन जहां होंगे वहां खटकेंगे भी. तो यूनिटी वाज देयर, बट देन कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो देयर. तो वो आपस में है. देखो, आपस outside people must not interfere or take advantage of the conflict of the people. लोगों के आपस की जो रंजिश है, आपस की जो प्रॉब्लम्स है, उसका फायदा ये बाहर की कंट्रीज को नहीं उठाना चाहिए. लेकिन यही होता था. दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑफ डिवाइड एंड रूल. Dividing the Indian people and then ruling on them, that was a major thing, that was a major way, major factor that was acting on the Indians. Got it? So, Congress tried to forge these groups in one community. कम्युनिटी नहीं कहेंगे. इनफैक्ट आई मीन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए इन सारे लोगों का, जिनका अलग अलग नोशन था, यू नो, बॉन्डेड लेबर, एग्री फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, द पीपल हु आर देयर इन द सिटी, द पीपल हु आर देयर इन द विलेजेस, ये सारे लोग एक साथ कैसे आए? हाउ डिड दीज पीपल कम टुगेदर? व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय कांग्रेस एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट? How did all these people and their efforts bring freedom for India? ठीक है, ये समझने की बात है. पहले हमने क्या पढ़ा है? We have understood in the previous text book means 8th class की बुक में जो हमने पढ़ा है, it was growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century, 1910, 11, 12 तक. इसमें हम क्या करेंगे? We are picking up the story with two movements. We will be talking about two major movements, non-cooperation and civil disobedience. This chapter deals with, हम बार बार इसको इसलिए कहते हैं ना, बिकॉज these two movements were like turning point for the Indian national movement. इसलिए हर जगह पे इसका जिक्र होता ही होता है. Deals with two big movements. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस. Got it? नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमको यही समझ में आएगा कि किस तरह से, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब आप आगे 11-12 में व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, यू कम टू नो दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज, नॉन कोऑपरेशन भी था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज in a true sense called as a mass movement because women were also involved into it. ठीक है, पहली बार it was that women participation was felt on a very large scale.
एंड नेशनलिज्म क्या था? कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. लोगों का सोचने का तरीका ही बदल गया था. द वे पीपल थॉट, द वे पीपल इंटरैक्टेड, द वे पीपल एक्टेड, वो सारी चीजें जो है वो बदल गई थी विद दिस नेशनलिस्टिक मूवमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the pre-situations or with the existing groups which wanted to follow nationalistic policies under the leadership of Congress. महात्मा गांधी खाली नहीं कहेंगे because it was talking about various kinds of things. काफी सारी चीजें इसमें हमको जो है वो क्लियर होंगी. तो प्री कंडीशंस फॉर नॉन कोऑपरेशन, अभी इसको इस तरह से समझो कि प्री कंडीशंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन क्या था कि उस समय की सिचुएशन में सबसे पहली चीज तो ये हो रही थी. आई होप यू आर अवेयर. ओके, इसी में देयर वाज खिलाफत एंड उसी के साथ गांधी जी ने अटैच कर दिया नॉन कोऑपरेशन. ठीक है, वेरी स्मार्टली गांधी जी अटैच नॉन कोऑपरेशन टू दैट. क्योंकि आफ्टर 1919 में हमको दिखता है नेशनल मूवमेंट जो है इट वाज स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज. आफ्टर 1919 national movement was spreading to new areas, new social groups and new modes of struggle. Okay, First World War ended in 1918. So what happens is that after 1919, every time we are finding that national movement spreading to new areas. Okay, national movement was spreading to new areas. नई जगह पे नए तरीके से. एंड अब इसमें who were the people participating it? Many social groups were there, many new ideas were coming up and new areas and new social groups were also getting involved. With new mode of struggle. Okay. अब ये न्यू मोड क्या था? न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल में व्हाट वाज द मेजर थिंग विच वाज अभी यहां पे मैं ये बताना चाहूंगी कि द मोड ऑफ स्ट्रगल दैट वी हैड फॉलोड, इंडिया को फ्री करने के लिए जो तरीका हमने अपनाया, what we followed, nowhere in the world was that mode. That is uniqueness about Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के लिए सबसे ज्यादा यूनिक whatever is there is कि जब new modes of struggle are developing, तो how do we understand these developments? और इसका implication क्या हुआ? What was its outcome? इसका नतीजा क्या निकला? All these movements that were happening, इसका क्योंकि ये how did it develop? नए लोगों को नए तरीके से नई चीजों को प्लान करके चलाना is not a simple task. So how did this task happen and who were the people involved? Maximum contribution किसका था? This is what we need to understand and this is what we will be doing. तो सबसे पहले क्या हमको समझना है कि the situation in India, after First World War. क्योंकि आगे की डेवलपमेंट्स इसी से रिलेटेड है. The further struggle, the further movements are related to this only.
there was a new economic and political situation. पहला जो पॉइंट है that is a new economic and political situation developed. Got it? नए तरीके से सोचने का तरीका लोगों का बदल रहा था, इंटरैक्शन बदल रहे थे. तो these new conditions, these new ways of thinking and earning. अभी क्या हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का तो देयर वाज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, बट यस इंडिया वाज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड. इंडियाज इन्वॉल्वमेंट वाज देयर. कैसे? ब्रिटिशर्स वेर पार्टिसिपेटिंग. And Britishers, they had to utilize all the resources and all the things that they wanted from the colony. जो कॉलोनी से उनको जो भी चीजें चाहिए थी, जैसे भी हो रहा था, they were extracting that from India. And this was something that was very irritating for the Indians. Indians को यही चीज सबसे बेकार लग रही थी कि why are the Britishers, यहां से ही the real struggle had started from here. क्योंकि अपना what happens is to fulfill their selfish needs, they started troubling the Indians. And for that purpose, the first thing that they had done, पहला तो हुआ कि huge defense expenditure. इंडियंस का पहला ऑपोजिशन यही था that Britishers are participating in the war. So why should Indians pay for it? आपने वॉर में हिस्सा लिया है तो आप अपने तरीके से उसको हैंडल करो. Why Indians should pay for it? It led to huge defense expenditure. काफी तेजी से ये बढ़ा. And it was financed by war, loans and increasing taxes. लोन लिया था इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज से, अब वो लोन चुकाना है. वॉर लोन्स वेयर देयर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. ये सब चीजें इंडिया में पहले नहीं थी. दे वर ट्रेडिंग, यहां से सामान ले जा रहे थे, सामान लाके दे वर सेलिंग द गुड्स हियर, दे वर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर, ऑल दीज थिंग्स वेयर देयर. बट नाउ, जैसा कि वी हैड ऑलरेडी सीन, अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन वाज बीइंग क्रिएटेड. तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि आखिर ये न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी. व्हाट वाज दिस न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन? तो सबसे पहले इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया. ऑल द मनी दैट वाज टू बी स्पेंड ऑन डिफेंस वाज इंक्रीज्ड. कस्टम ड्यूटीज वाज रेज्ड. कस्टम ड्यूटीज, एनी मटेरियल दैट इज गोइंग आउटसाइड, एक्सपोर्ट के लिए कस्टम कहां देते हैं हम? इधर इन द सी पोर्ट और इधर ऑन द सी पोर्ट और ऑन द एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है. तो हमारा सामान कुछ भी अगर बाहर जाएगा तो वी हैव टू पे अ लॉट. देयर मटेरियल इज कमिंग इनसाइड. अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कम पैसे देने, लेकिन एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो लॉट ऑफ मनी वी हैव टू पे एज द ड्यूटी टू द ब्रिटिशर्स. ओके. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम income tax was introduced. Got it? तो आप देख लो, Indians were not prepared for it. Indians were mentally not at all prepared for it. As a result, what happened? Through the war years, the prices increased. These all changes had happened between 1914 to 1918. ये सारी चीजें खुद वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना पैसा लगाए ना. हमारा पैसा क्यों लगा रहे हैं वॉर में? We were not participating in the war. That is where the Indians started opposing. यहां से the real opposition had started. Okay? So, prices increased.
doubling between 1913 to 1918. हर एक चीज की वॉर ईयर्स जो था बिटवीन 1913 टू 1918. For everything, the prices have increased a lot and the people were facing extreme hardship. It was a time of extreme hardship for the common people. आम आदमी के लिए ये बिल्कुल भी उनके बस की बात नहीं थी. The way the changes were happening, the way that they were dealing. Extreme hardship for the common people, please understand. And they went to the villages. नहीं, वो सब गुमास्तास थे ना. Remember all those that we were talking about. उन्हीं लोगों को इन्होंने इसमें लगाया था काम पे. अभी तो गुमास्तास वाला सिचुएशन थोड़ा पीछे का है, of course. But then there were so many intermediaries. बहुत सारे लोग थे जो ब्रिटिशर्स के बीच में और विलेजर्स के बीच में ना एक लिंक की तरह काम करते थे. They used to work as link. तो villages have to supply soldiers and forced recruitment was there in rural areas. Villages कहां से आएंगे भैया? वॉर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Who are the people who will be going and dying for you? ऐसा आपने क्या किया है कि हम आपके लिए अपनी जान दे दें? They have not done anything for the Indians. So now why are they asking help from the Indians? Okay, so villages were to supply soldiers or army men. Villagers refused. They said, we don't want to be a part of the army. हमको आर्मी में नहीं जाना है, हम अपने फार्मर हैं, we will be doing farming. They said, we'll give you good money. लेकिन every time money doesn't work. Every time आप हमेशा जो है you cannot force every time these people to give money, give your lives for your sake. आपने क्या किया है कि आपके लिए हम अपनी जिंदगी दे दें? What special have the Britishers done that the Indians lay down their lives for them? So they were not ready for that. So villagers, they were called to supply soldiers, forced recruitment was there and जबरदस्ती था. Forced recruitment in the army. India, because the villagers refused. तो उनको जबरदस्ती उन्होंने आर्मी में इंक्लूड किया and this has given a widespread anger. Now the people were seething with anger. काफी ज्यादा इनको परेशानी हो रही थी. So 19 and apart from that, ये तो सारी चीजें थी that was happening on the ground situation. Ground situation में all these things were happening. In the mid time, what happened? 1918 to 19, 1918, 19 and 19 and 19, 20, 21. सूखा पड़ रहा था. लोग एग्रीकल्चर खेती कर ही नहीं पा रहे थे. You know, to do agriculture, you need to invest some money. So investment in agriculture was rarely there. Hardly it was found. Got it? Crops failed in many parts of India. सूखा पड़ गया ना. Got it? And because of this crop failure, the people were facing lot of hardship. काफी सारी problems का सामना करना पड़ रहा था. And there was acute shortage of food. खाने के लिए ही जब नहीं है, when there is no food to eat, lot of shortage of food is there. So how will the people survive? और forced recruitment करके क्या कर लेंगे आप? When the sick people, very timid people, डरे हुए लोग, बीमार लोग, how can they help? How will they help
द ब्रिटिशर्स, और ऊपर से आप जबरदस्ती उनको आर्मी में भी भर्ती करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी। एज अ रिजल्ट देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई। गॉट इट? देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की बहुत कमी हो गई। सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई। ऑल दीज नेचुरल कैलामिटीज वेयर अकरिंग फ्रीक्वेंटली। तो आदमी आप अपने जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है उससे तो मीट कर लेता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर से मीट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ है टू मीट द नेचुरल डिजास्टर्स। गॉट इट? तो इसके बाद देयर वॉज स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, या हाँ, जो बीमारी बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचती है, इट एनगल्फ्स मेनी पीपल ना, ये एपिडेमिक थी। एंड 1921 का जो सेंसस हुआ, इट वाज फाउंड दैट 12 to 13 million people have perished. 12 to 13 million people have died. Imagine, children. And famine was there and epidemic. It's a big number. When you talk about the problems that people were facing during the First World War, आपको ये देना जरूरी है. You need to mention this as important, that according to census of 1921, 12 to 13 million people perished. Perished means गायब हो गए. गायब क्या हो गया? मर गए. They are not written dead. ठीक है? Why? Because of famine, due to famine and epidemic. Got it? इसी से आप अंदाजा लगा लो that how tough was the situation. What kind of problems people were facing. And 2-3 things that are there, आप जब देते हो, when you are talking about the sorry students, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे हो, तो ये डेटाज आपको मेंशन करना जरूरी है. गॉट इट? प्लीज ट्राई टू मेंशन दीज डेटाज. ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस टॉपिक. जो मेरे को पॉइंट करवाना था, व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट द क्वेश्चंस दैट आर asked from the topics. This is what I wanted you, because what happens that statement is there followed by explanation. So when the statement is there, so which are the statements that are important? I wanted you to mark it in your book. That's why एक तो आप ये देख लो, the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. Got it? How did the different groups come together? And what was the shared bond? ये आपको बताना है इसमें. You need to talk about it. And each class and group felt the effect of colonialism differently. सबका experience अलग था, सबका notion of freedom अलग था. It was not always the same. ओके, आपका वो जो डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर में आगे के मतलब चैप्टर में से यू हैव टू टेक द पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर, बट यू नो स्टेटमेंट्स ये वाले पूछ लेते हैं, आंसर आपको चैप्टर में से देना है. दैट्स व्हाई आई मेड यू मार्क दिस स्टेटमेंट. अनदर स्टेटमेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज यस, ये मैंने कल भी, अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. कि नेशनलिज्म जो है इट इज़ रिलेटेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, आपको बताना है. अनदर थिंग दैट इज देयर इज
हाँ, नेशनल मूवमेंट नहीं, यस, First World War had brought the war created a new economic and political situation in India. How? Justify the statement. अब इसमें आपको आगे के ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बताना है. गॉट इट चिल्ड्रन? सो जस्ट दीज 3 questions, प्लीज कॉन्सेंट्रेट on that. I wanted to tell you. Next we will be continuing in the next video. Till then children, thank you so much and all the best to you.